Hello friends, today we are going to study the second lecture of the nervous system and today's topic will be central nervous system. आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपको पता है मेन पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो पहले हम ब्रेन को देखेंगे, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्टली ब्रेन इट हैज़ 3 लेयर्स, ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. These are the 3 layers of the brain. Dura matter, it is the dense and tough layer that line is the skull. Araconid matter, this is the middle layer, and pia matter, this is the inner layer of the brain that is covers the fissures of the brain and spinal cord. So these are the 3 layers of the brain, and these are collectively called meninges. इनको हम meninges बोलते हैं. So what are the function of these 3 layers? What are the function of these 3 layers called meninges? These protect the delicate nerve tissues. These protect the delicate nerve tissues of the brain. जो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है to protect delicate nerve tissues. Brain has approximately 1.3 kg of weight. 1.3 kg. Now, what are the parts of brain? Firstly, cerebrum. It is the largest part of the brain. It has a right and left cerebral hemispheres that are connected by corpus callosum. Corpus callosum राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में होता है जो इनको जोड़ता है आपस में. ईच लोब, जैसे कि इसमें 2 लोब्स होते हैं, बड़े 2 लोब्स. ईच लोब इज कवर्ड बाय ग्रे मैटर, दैट इज द आउटर कवरिंग known as cortex. Inner part by white matter. और इनर कवरिंग होती है, दैट इज द वाइट मैटर. ईच लोब हैज एलिवेशंस called gyri and depressions called sulci. So अभी तक हमने ये पढ़ा कि ईच लोब उसकी कवरिंग होती है बाय ग्रे मैटर, वो आउटर कवरिंग होती है नोन एज कॉर्टेक्स. और इनर पार्ट जो इनर साइड होता है वहाँ से कवर होते हैं वाइट मैटर, उसको बोलते हैं वाइट मैटर. हर किसी लोब में एलिवेशंस होते हैं कॉल्ड गायरी एंड हर किसी लोब में डिप्रेशंस होते हैं कॉल्ड सल्काई. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द cerebrum? It helps us in memory, association, judgment and thoughts, production of the thoughts, memorizing the things, association, judgment. Now one more important thing, ventricles are the spaces in the cerebrum which contain CSF. ventricles spaces होते हैं cerebrum में जिसमें होता है CSF, cerebro spinal fluid, जो एक्ट करता है एज cushion for the brain and it maintains uniform pressure to keep the brain and spinal cord moist. CSF. CSF supplies nutrients to nervous system tissues. CSF also removes waste products from the cerebral metabolism. तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. Now cerebellum. This is also known as
small brain or hindbrain. It is found beneath the posterior part of the cerebrum. Now, what are the functions of the cerebellum? It helps in balance, posture, coordination of voluntary movements, and muscle tone. Going back to the cerebrum, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ और मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस, it is the inflammation of the brain and spinal cord. Inflammation of the brain and spinal cord membrane is typically caused by an infection. जब भी कभी इन्फेक्शन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन को, तो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस. और एक टर्म आप याद रख लीजिए, लंबर पंक्चर. लंबर पंक्चर, also known as spinal tap, is a medical procedure in which a needle is inserted into the spinal canal, most commonly to collect cerebrospinal fluid. तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा CSF, cerebrospinal fluid. लंबर पंक्चर हम इसीलिए करते हैं कि इसको कलेक्ट करेंगे फॉर वेरियस डायग्नोसिंग टेस्ट्स, और इसको हम स्पाइनल पंक्चर भी बोलते हैं. इट इज़ डन टू CSF, इट इज़ डन इन CSF टू रिलीज द प्रेशर ऑफ द फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से जब CSF मतलब जब लंबर पंक्चर से हम CSF निकालते हैं तो ब्रेन से प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है. और वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए भी करते हैं, हम CSF निकालते हैं वहाँ से लंबर पंक्चर से. नाउ ब्रेन स्टेम, इसमें हम पढ़ेंगे पहले पॉनस. पॉनस की मेन फंक्शन होती है, इट कंडक्ट्स सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन डाउन टू सेरेबेलम. पॉनस कंडक्ट्स सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन डाउन टू सेरेबेलम. पॉनस, it contains nerve fibers. Pons contains nerve fibers which connect cerebellum and cerebrum with rest of the brain. So it is the main function of the pons. It contains nerve fibers which connect cerebellum, that is cerebellum, and on the back side that is the cerebrum with rest of the brain. So it is the main function of the pons. Now medulla oblongata. Medulla oblongata, or simply medulla, is a long stem-like structure which makes up part of the brainstem. It is anterior and partially inferior to the cerebellum. It is cone-shaped neural mass responsible for autonomic involuntary functions ranging from vomiting to sneezing. So ये involuntary functions भी कंट्रोल करता है, वोमिटिंग हो या स्नीजिंग हो. Now thalamus. It is called the sensory relay station, relaying of sensory signals and motor signals to cerebral cortex. So it is the main function of the thalamus. It is known as sensory relay station. It relays the sensory signals and motor signals to cerebral cortex. Now, what are the functions of the thalamus? Regulation of consciousness, sleep and alertness. Regulation of consciousness, sleep and alertness. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि ये सेरेबेलम, इसकी कौन सी फंक्शंस ये क्या मेंटेन करता है, जैसे बैलेंस, पोस्चर, ऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड मसल टोन. इसी तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा या थैलेमस, थैलेमस की फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अलर्टनेस. नाउ लास्टली hypothalamus. Hypothalamus is a small region. It is a small region of the brain. It is located at the base of the brain, near the pituitary gland. While it is very small, the hypothalamus plays a crucial role in many important functions, including releasing hormones, regulating body temperature. These are the various functions of the hypothalamus. Now, below we will see the functions in depth. It helps in the synthesis of vasopressin, important hormone, control of anterior pituitary secretion, control of appetite, control of thirst,
regulation of body temperature. It helps in sexual behavior, control of cardiac rhythms, and emotional feelings. It controls emotional feelings. So it has a vast range of functions. So today we have completed the central nervous system. Thank you. If you like the video, then please share it. Thank you.